अमेजॉन आ जाओ अंदर। रुकना यार, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, जरा चेक कर लेंगे। फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, थोड़ा चेक कर लेंगे। Not 7 Pro. उसमें देखो सीरियल नंबर लिखा है क्या? सीरियल नंबर लिखा है, सीरियल नंबर पैकेट पे होगा, देखो ऊपर टॉप पे देखो। ये तो शायद उसका है जो जिसने पार्सल किया है ना। ये उसका नंबर है। नहीं, इसका सीरियल नंबर नहीं लिखा है क्या? ये ओपन करेगा तो मिल जाएगा क्या? ओपन नहीं, तो ओपन दे दो, डिलीवरी करने का बाद में ओपन करो। अच्छा, इसको फॉरवर्ड कर दूं? एक मिनट, किसका फोन? ये फोन? हाँ, ये Note 7 Pro. सिम कार्ड लगे हुए। ठीक है। So Amazon, go to the Amazon also. Amazon app. In which phone you have booked? This one only. Go to the Amazon app. Your orders. This phone, sir? This is a case cover. This one. हो गया? OTP.
ऐसा Ini tinta kali Pak? Tinta. Hindi na. Napag-okay na. इसका सिम निकाल दो। So there's no charger, nothing, so एक ही सिम है क्या? ये रख लूं पिन? अभी रुक जा। फोन अच्छा है ना ये? अच्छा है। हाँ रिप्लेसमेंट लायक है नहीं। ये किसका फोन? क्या बोल रहे हैं? आईफोन। आईफोन 11 कितना हुई? 53 और किसका कितना है इसके एक्सचेंज? एक्सचेंज 6000 47 का पड़ा है यार। सही आइटम है ना? बहुत फ्रॉड हो रहा है मालूम है अमेजन से। वो नहीं है, और दूसरा आया तो और एक टाइम एसपीएस को कॉल कर दियो तो बताओ। यार चालू हो रहा है, एक बार देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। 2 मिनट और बस। चालू हो जावे। तुम यही कर्नाटक के हो? कर्नाटक के हो? बेंगलुरु। नहीं होगा क्या चालू? टाइम का लगेगा। तो अगर कुछ हुआ मेरा तो अंदर डेटा रीसेट कर दिया तो पूरा हो जाएगा ना। फिर भी रीसेट हो गया तो क्या है? 1 मिनट रुक जाए यार। वो टाइम लगेगा सर, टाइम हो जाएगा। 2 मिनट सर, बस देखो हो गया। ठीक है लो, स्विच ऑफ कर दो। हाँ, और ये गेट बंद कर देना।
दोस्तों आ गया है आईफोन और अब हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एक्सचेंज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके यार, माय मीटिंग इज गोइंग ऑन। सब कोई एक ही बार में आता है, okay? सब एक टाइम पे आते हैं, सब एक टाइम पे आते हैं, सब एक टाइम पे आते हैं। Everyone is coming. ये है मेरा आईफोन। क्या है बे? करेक्ट, दिस इज माय आईफोन। अभी हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस, मैं कैंची लेके आता हूँ इसको ओपन करने के लिए। मेरे पास कैंची नहीं। होल्ड ऑन। और मुझे कैंची लेने के लिए अगले घर में जाना पड़ता है, जो सब बात। मेरे पास कैंची है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द बॉक्स। करेक्ट। लेट मी इसको थोड़ा सा नीचे करने का। Why this is not okay? Yep, this is properly aligned, I think. Right. Okay, let's open the box. Whatever I got today from the Amazon delivery boy. Yeah. Okay, so this is the iPhone I got today. This box is original, I think. Okay. So designed by Apple in California, assembled in China. Okay, so they are giving the China-made iPhones, not the India-made. Okay. Name and address of the importer, Bengaluru. Okay, maximum retail price is 73,600 and year of import is September 2020. Okay, capacity is 128 GB. And where is the serial number? Let me find out. Where is the serial number? IMI code is there. Serial number, yeah. So serial number is there. Let me open the Apple website and let's check if this serial number is correct or not. Okay. So in the what I can say, I'm opening in my laptop. Then Apple checker, correct. So in the Apple checker I am opening the checkcoverage.apple.com. there is a text box for the serial number. Serial number is F4, capital F, then 4, then GD, then GD, okay, then 925 and VN73 and now F. Okay, so I have entered the serial number whatever is on the box. Okay, so let me hit submit button. Continue. Once I clicked on the continue, it is saying ki we are unable to display coverage detail because your device has not been registered. Please contact your Apple product retailer. Okay,
iPhone 11 there is a check another. Okay, ठीक है. So I am opening currently. इट इज सेइंग, ये कह रहा है कि अभी आपकी डिवाइस रजिस्टर नहीं है, डेट्स वाई हम इसका कोई भी अपडेट दे नहीं सकते हैं. डेट्स रजिस्टर नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया. ओके, सो आई एम ओपनिंग द बॉक्स. Yeah, this is the iPhone 11 I got from Amazon. Retailer name is Darshita. And it looks nice and it looks quite original product. Okay, it looks nice. You can see at the back side there is no any कुछ भी यहाँ पे डेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कलर फेड नहीं है. I hope कि it is the original one and it is the new one. It is not the used product and it is not the clone iPhone. I think so right now. Let me check further. Let me remove this. Okay. So now I'm opening. I'm quite new for the iPhone. This is my first iPhone, so I don't know exactly much about the iPhone. I think where is the power button? Power button is this one. This one is the power button, I think. I don't know exactly about the iPhone. Yeah, it is. It's got opened, as you can see here. It is opening. Hey, it is saying hello. Swipe up to open. Let me swipe up. Hola. Hello. English. Select your country. Where is my India? मेरा भारत महान. A B C D E F G H I E. Okay, G H and then that. This is my country. I love my country, India. Okay. So now quick start. Bring your current iPhone or iPad near this iPhone to sign. Oh, sorry, Peter. I don't have the iPhone now. Let me configure it manually. Continue. And then this is my Wi-Fi. Let me connect to the Wi-Fi. I will not show you the password. Sorry, Peter. 1, 2. Okay. It is trying to connect to the Wi-Fi. Yeah, it is done. It may take a few minutes to activate your iPhone. Then after I will check with this serial number and IMEI code in the Apple website whether it is a genuine iPhone or it is a fake. Let me check after that. Okay, so it is saying it may take a few minutes to activate your iPhone. Let's wait for a while. Oh yeah, it's done. Continue. Face detection set up later in the setting. Okay, create a password. Let me use my password. As you can see here, it is configuring. Restore from iCloud. Oh, sorry, I don't have. Restored from Mac or PC. Sorry, I don't have. Transfer directly from iPhone. This is my first iPhone, so I don't have the iPhone. Move data from Android. Yeah, it is correct. Move data from Android. Okay. So, but my Android is I'm creating the
video from my Android phone. So I am just clicking on the don't transfer app and data. Okay, Apple ID. Okay, what is this Apple ID? Let me enter my Apple ID. I have created the Apple ID once I ordered the Apple phone from the Apple website. On that time I have created the Apple ID, but I forgot the password, I think. What was the password? I don't remember. I think there is a case sensitive password I entered, but I don't remember what is the issue, and I think I have to do some more stuff to configure this. Let me click on the next. Okay, it is not use different Apple ID or iCloud and services. Forget password. Okay, Apple ID, that is like, I think so it was my current what you can say, current email address. But why it is not taking, let me find out. It is not the big issue, I will find out easily why it is not taking my password with my associated email. It is sending the password to my this SIM, which was removed from my mobile, whatever I replaced, exchanged. Okay, so how to configure it? I have to inject this SIM, because they are sending. Let me find out where is the injector key. Yeah, I got the injector key, but okay, let me plug it out. It's done. Now I have to move my okay. Where is the injector SIM port? Okay, I have instead of using Airtel, let me insert my Vodafone SIM. Okay, and सारी कॉल, सारे काम, सारे मैसेजेस इसी समय आने हैं। वैसे साला कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई कॉल नहीं करेगा, लेकिन जब आप काम कर रहे होगे तो जरूर कॉल आएंगी। जब आप कहीं बिजी होगे तो सब कोई याद करेगा, और जब आप फ्री होगे तो घंटा कोई याद नहीं करेगा। यही जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है, और हार ही हार है जिंदगी में, साला जीत कहीं नहीं। मैंने क्या बोला मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने क्या बोला।
और आपको भी ना समझ में आए तो मुझसे फिर पूछिएगा, मैं उसको देख करके। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना है? अबे खुल जा भाई। I will not show you my password. Okay. Okay. The registration is done in the Apple Store. Express setting, you can, okay, continue, up to date, okay, iCloud, keychain, continue. Siri? What is Siri? Hey, Siri helps you to get things done by asking, okay, continue. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri, what's the weather like today? Hey Siri, what's the weather like today? Hey Siri, what's the weather like today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Hey, who is Siri? Let me find out in the Google. Who is Siri? Share audio recording, not now. Screen time, continue. Share with app developers. Continue. Appearance, light, continue. Zoom, continue. Welcome to iPhone. Yay! Now let's check again with the serial number what I got at the box in my laptop. Okay. Swipe up to get started. कितनी बार स्टार्ट होगा भाई ये? Yay! This is my iPhone. बंद हो जा भाई. Yay! This is my iPhone. I got it. Now I am again continuing the call. X7G3 and continue. Yeah, still they are saying ki unable to display coverage details because your device has not been registered. Please contact your Apple product retailer or your wireless carrier to register this device. Why it is saying it is not? It is a China product क्या? Let me check the IMEI number. I think from the setting, from where I can get the settings. Yeah, from where I can get the settings. What is the IMEI number? अबे कहाँ लिखा था बे? यहाँ लिखा था शायद. Let me find out. What is the IMEI number? निकल जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है? Okay. 3568. One 1011 568. Traffic lights.
यार ये लोग कैप्चा कितना टफ रखते हैं भाई। कहाँ है कहाँ है? Okay, from the IMEI number, I got exactly the same release date was September 2019. It is a dual SIM. सिम कार्ड साइज है नैनो सिम एंड नैनो सिम। GSM ये सब बता रहा है, ये डिस्प्ले भी बता रहा है। और फ्रॉम द IMEI नंबर, मॉडल इज iPhone A2221, iPhone 11 sorry, and brand is Apple and IMEI. Yeah, I got the real iPhone from the Darshita seller of Amazon. Yeah, so it is the real iPhone, correct. I got verified. I just verified this mobile through the IMEI. You can go to the imei.info where you can write the IMEI number, whatever it is in the box. This one is the IMEI number, serial number. This one, so you can get it. And just check through the imei.info website. Correct? Okay. So it is the correct iPhone and it looks nice in the white color. It is my choice. The white color I need it. Okay. So I think whatever the iPhone I got, it is genuine, given by the Amazon, and seller was Darshita. It is the correct iPhone and it is a genuine iPhone. That was my big concern now, but I got the real one and it is amazing. Let me figure it out clearly ki what is the performance and if there is any heating issue, something like that. Very many things to check when I will use it during the use of this iPhone. Okay, so let's check this iPhone. I will drop another review very soon after using it for 2-3 days, and then I will make another video for the review of this iPhone, as well as I will check more थोड़े से ज्यादा देखूंगा मैं कि ये सही है या गलत है। अभी चेक करने में मुझको लगेंगे कम से कम 1 या 2 दिन, तो मैं फिर से इस आईफोन के साथ आऊंगा जो कि मुझे आज मिला है अमेजन की तरफ से। ओके, हम फिर से एक बार मिलते हैं 1 दिन के बाद। डिटेल रिव्यू ऑफ दिस आईफोन 11, नॉट दैट रिव्यू, ओल्ड वर्जन है, बट मैं इसकी वैलिडिटी और ये सब बताऊंगा आपको। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल ये आईफोन जेन्युइन लग रहा है। थैंक्स। अपनी सेहत पे ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, मास्क प्रॉपरली लगाइए और कोई भी बाहर की चीज आने के बाद हाथ प्रॉपरली वॉश करिए, जो कि मैं करने जा रहा हूं। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। फिर से मिलते हैं 2 या 3 दिन के बाद।